My name is Krishan Kant Luna, more precisely Dr. Krishan Kant Luna, and I have secured all India 50 this and from my particulars, I have done my bachelor's in medicine and surgery, from Maulana Azad Medical College, New Delhi, and I am here to share my optional strategy uh, for the medical science optional people. Yes. Firstly, I would go into why did I choose medical science as optional? Because I was doing my graduation in it. I did my MBBS. So medical science optional is there. It is specially for doctors only because no very there are very other there are matlab, other alternate medicine systems as well, homeopathy and all. They also give exams, but they do not opt medical science that much. But since I did my MBBS, so I found medical science very suitable. Plus, the college I come from is Maulana Azad College, Maulana Azad Medical College, MMC, uh, Maulana Azad Medical College. So they keep you very, strict and tight when it comes to academics. So instead of choosing any other optional, I like the same dilemma every medical science optional people they have कि मतलब whether they should choose medical science or sociology or anthropology or any other smaller subject because medical science optional is a very very vast subject. Like there are subjects in between subject in this big subject. So उनके लिए मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि first you analyze कि whether how good you were during your college time कि आपका academics में कैसा हिसाब किताब था, how were you able to study, how were you able to you know perform in your college examination, were you able to tackle the subjects because some subjects were very tough and some subjects are comparatively easier and shorter. But still I would say कि before you go for any other optional जैसे कि हम आजकल जो भी चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी या फिलोसफी जिनको स्मॉलर सब्जेक्ट्स बोला जाता है, with that regard I would like to say कि there are many toppers. GS individual strategy also sir, time taken to complete basic subject. Okay, okay, I'll cover it up. Don't worry. तो ऑप्शनल के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि देर आर टॉपर्स विद सच वेरी जिसे बोलते हैं मेन स्ट्रीम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल दिस बट आई टू टेल यू वन थिंग दैट देर आर मेनी पीपल हु आर स्टक with those optional as well. They are not able to increase their score in those optional. You would never get to see their side of the story, but now they are stuck. I know my batchmates are there, my juniors are there, my seniors are there who belong to my college and other medical colleges. They took anthropology and other subjects, but now they are in trouble because वो नहीं पा रहे हैं उसमें. तो you do not fall in that trap. Instead, you should and you can go for medical science optional. And it's a bit lengthy optional, but yes, it's a very scoring optional. Which optional they'll tell you one thing that it's a scoring optional. Plus, the biggest advantage is that you are familiar with the subject. Means में क्या होता है कि sometimes the question do comes out of syllabus. But अगर question out of syllabus आएगा and you are familiar with the subject, so you will be able to tackle it easily. ये एक बहुत बड़ा डर होता है and this actually happens. Questions do come out of syllabus. So you have to take this point into consideration. Number one. Number two is familiarity with the subject. Number three, the material for medical science optional is well available. So these three these three reasons can be uh, your reason to pick medical science optional. So this was my reason. I did not want to choose a new subject because मेरे को पता नहीं था कि कैसे अगर मैं सोशियोलॉजी लूँ या ये लूँ या कोई और सब्जेक्ट लूँ मैं कैसे उसको प्रिपेयर करूँगा बिकॉज फिर वो कहीं ना कहीं माइंड में रहता ही है बिकॉज इट्स नॉट योर बैकग्राउंड. तो मेरे को लगता था कि मैं मेरे को जो गाइडेंस मिलेगी विल दैट बी इनफ और नॉट.
So out of all those reasons, I decided to go for medical science. Now coming to the strategy, how do we start preparing optional? For example, if you have started your preparation in May, June, currently the June exam is going on. Sir, can you suggest best way? I'll take your doubts at the end. I'm discussing optional अभी तो ज़्यादा time नहीं लगेगा. Optional strategy is not that big and vast. So if you are starting, for example, the June is going on. So there is two paper in optional. UPSC optional paper has two paper, paper number one, paper number two. What I usually suggest is like we are talking in June. So June, July, August, and mid-September tak you should be able to complete paper number one or paper number two. One of the papers should be completed. Then come your November, September. Half September is done. September के बाद October, November, December. ठीक है. So October, November, December, and half September you can take 5 days break. So in the rest half of the year, rest half of the year till December, you should be able to complete paper number two. The ideal strategy जो सब options में बताई जाती है firstly is that you should be able to complete 80% of your optional. मैं इसमें थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ. आई बिलीव दैट यू शुड प्रिपेयर 100% ऑफ योर ऑप्शनल टिल दिसंबर. अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंड करना है ऑप्शनल को तो आप जनवरी हाफ तक ले जाइए. बट जनवरी मिड जनवरी लाइक 15 जनवरी 20 जनवरी तक लास्ट आप ऑप्शनल को टच करिए. नहीं तो उसके बाद मई में आजकल प्रीलिम्स हो रहा है तो यू हैव टू गो फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स बी सो टफ सो इट विल रिक्वायर योर फेब्रुवरी मार्च अप्रैल. तो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको फ्रेश कैंडिडेट्स को मैं यही बोलूंगा कि यू कंप्लीट योर ऑप्शनल फ्रॉम जून टिल जनवरी मिड. ठीक है. जो कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस्ड है जो कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस्ड है जैसे एक अटेम्प्ट मेंस का दे चुके हैं या इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि यू कैन टेक योर मेडिकल साइंस ऑप्शनल टिल फेब्रवरी. फेब्रवरी तक आप उसे ले सकते हो या इवन टिल मार्च. बट अगर आप इसको मार्च तक लेके जाओगे तो आपको इसकी ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी. है ना. बिकॉज देन यू विल बी मोर प्रीलिम्स फोकस देन यू कैन नॉट गिव मोर टाइम टू ऑप्शनल. स्टडी रिजीम मैं यही बताऊंगा कि स्टडी रिजीम फॉर fresher or even the experienced candidates throughout the year, what I would say is every day you do 4 hours of optional study in a day, 4 hours of your GS study, and 4 hours of your GS study, and then give at least an hour for CSAT every day. So CSAT पे मैं जरूर focus देता हूँ because I have seen so many tragedy stories because of CSAT. But yes, optional required 3.5 to 4 hours every day, no matter which optional it is. Secondly, what I would like to tell you, and secondly, is that test series, whether the optional test series is important. Yes, optional test series is important. I took test series. मैंने जो optional medical science optional की test series ली थी वो IS Delhi Institute से ली थी. And my mentors there were Adesh sir was there and Gajanan sir was there. They helped me out a lot, and I would like to thank them if they see this. I am thanking them. They helped me out a lot in medical science optional. So test series is required. रीजन ये है कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. आपको आंसर बनाना आ जाएगा. You'll know how to structure your answers based on the feedback. And lastly is that टेस्ट सीरीज से ना आपका एक शेड्यूल अपने आप ही बन जाता है. फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है शेड्यूल. वो उसका पेपर रहेगा एनाटमी का या जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं दोज पेपर विल बी देयर. सो उसी के हिसाब से जो है अपनी जो है ऑप्शनल की जो पढ़ाई है वो आप उससे सिंक कर सकते हो. सो टेस्ट सीरीज इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू रिक्वायर एक्सपर्ट है ना रिव्यूज ऑन योर आंसर. मेडिकल साइंस ऑप्शनल में आपको रिव्यू कराने की ज़रूरत है अपने आंसर्स को. ठीक है. तो टेस्ट सीरीज यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई बुक लिस्ट with regard to optional subject. Basically, medical science paper 1 has subject from first years, which is anatomy, physiology, and biochemistry in part 1 of paper 1. And part 2 में जो आपके subjects आते हैं that are your second years. That are your okay. I'll provide you a complete roadmap. तो सी मतलब
The part टू subjects are basically your second year subject जिसमें आपकी जो है pathology, pharmacology, and then there is forensic medicine एंड माइक्रोबायोलॉजी. अब हुआ ये है कि जो न्यू एमबीबीएस कैंडिडेट्स हैं शायद उनका जो है सिलेबस ऊपर नीचे हो गया है because some subjects have been shifted to final year as per what I know, but the UPSC has kept the pattern same as the old one. तो उनमें कोई changes नहीं आए हैं, so you'll have to prepare paper one according to that. So अब इसके मैं time duration के साथ बता देता हूँ. For example, anatomy I refer to BD चौरसिया. BD चौरसिया was for your bodily anatomy जितनी भी है. Second is your neuro anatomy is Inderbir Singh. Inderbir Singh is a very good book. And then there is IB Singh, there is a book of embryology as well. Now, physiology, my was AK Jan, and I refer to Genog a little bit. Biochemistry, I did not go that much into ye as well. I refer to Vasudevan. Lippincott as well for few of the topics like DNA replication and all that. Okay, going for the roadmap is like if you start in June. So let's say we are targeting paper one. So paper one has subjects of anatomy, physiology, and your biochemistry along with your second year subjects. Second year subjects gonna be your uh, pathology. Pathology is very simple. You can either refer to Harsh Mohan or the other one Robbins. I made notes from the Robbins क्योंकि even in college time I read Robbins, so I went for Robbins. Pharmacology you can go for KD Tripathi, and forensic medicine is Anil Agarwal, and microbiology is there is a textbook of microbiology by CP Baveja sir. He was a professor in my college, so even AK Jain sir used to teach us physiology, so I referred his books in physiology only. Bit of Genom, yes, no doubt about that. So how do we go about it? First year is that आप पेपर वन को अगर टारगेट कर रहे हो तो these subjects you have, these 8 subjects or 7 subjects you have. जैसे anatomy is a very big subject. So what you do is for first month, let's suppose कि जून में आप पूरी anatomy cover करोगे. So you take anatomy and you take a short subject with it, which is a bit easier to understand. जैसे कि anatomy के साथ आप biochemistry को क्लब कर लो. अगर आप anatomy और pathology जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट इकट्ठे लोगे या anatomy और pharmacology जैसा सब्जेक्ट इकट्ठा प्रिपेयर करोगे तो इट विल बी बिकम वेरी टफ. सो यू नीड टू पिक मेक पेयर्स ऑफ लिटिल सब्जेक्ट्स. जैसे पेपर वन में आप पेयर बना लो anatomy और बायोकेमिस्ट्री का. आप फिर सेकेंड ईयर से पेयर बना लो फिजियोलॉजी का, आप बना लो पैथोलॉजी के साथ, बिकॉज पैथोलॉजी थोड़ा कम कोर्स है. देन अनदर पेयर दैट यू कैन मेक, दैट आई यूज टू डू इज दैट यू मेक अ पेयर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी. सो वन बिग सब्जेक्ट, वन शॉर्ट सब्जेक्ट, एंड वन बिग सब्जेक्ट, वन शॉर्ट सब्जेक्ट, ऐसे करते करते फॉर 3 months, you 3.5 months you complete your paper one. ठीक है. So book list I have given you: anatomy BD Charasia, and physiology AK Jain and Ganok. Biochemistry is Vasudevan, and for second year subject pathologies, my choice is Robbins. You can go for Harsh Mohan as well. It is basically summary of Robbins only. For forensic medicine, there is Anil Agarwal, and for microbiology, CP Baveja sir, there is also book of parasitology as well. You can refer it. And remaining pharmacology is KD Tripathi. Pharmacology has those big bulky books as well. I'm not naming them. You do not need to go that much. Oh, Katzeng and all. We have read it in our college time, but not useful for it. KDT is very specific and to the point. So this is your first year subject. The book list is done. One thing that I wish to add is that subjects like biochemistry, subjects like forensic medicine, even pharmacology to that point, they are a bit dynamic. Pharmacology में नई drugs आ रही हैं. For example, Ozempic. Ozempic is a new drug. I am expecting question on Ozempic. वो आएगा उस पे कि GLP-1 receptor agonist.
सो यू प्रिपेयर अ बिट एक्स्ट्रा फॉर इट. अब जैसे बायोकेमिस्ट्री में क्रिस्पर cas 9 और ये वो, वैसे भी यू रीड इट इन साइंस एंड टेक. सो these such things they keep coming in the market, है ना, the new updates that are happening. So you also have to take a look on these issues from medical science point of view. ठीक है, क्या नई जीन थेरेपी आ रही है, जैसे सिकल सेल एनीमिया की नई थेरेपी आ गई है कैसजीबी और लिवजीनिया, तो कैसे बनी है, इट कैन कम एज अ क्वेश्चन इन बायोकेमिस्ट्री. और दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन इन बायोकेमिस्ट्री बेस्ड ऑन दैट कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझाओ or illustrate about it. So you need to keep a bit on the current affairs. Secondly, one thing I would say is that subjects like anatomy, physiology, and even to that extent pathology as well, biochemistry to up to certain extent microbiology, or you name it, the first year subject and the second year subject, or the paper one subjects, they are very diagram heavy. They are illustration heavy. And if you want more marks in your answers, you will have to make good diagrams. Do not go for too much artistic things that we used to do back in the day in our college, कि एक एक चीज के लिए नर्व का येलो कलर है, उसका ये यू कैन पिक थ्री कलर, बिकॉज जब आप मेंस लिख रहे होगे इतना टाइम नहीं होगा, 3 घंटे का पेपर होगा एंड यू हैव टू कंप्लीट वेरी फास्ट. बट यू हैव टू पिक सर्टेन कलर्स, लाइक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कलर्स, कीप अ रेड पेंसिल for your blood vessels and blue for your veins and yellow for ये और rest brown for muscles. ये चार पेंसिल से आपका काम चल जाएगा. Even for blue you can use pen as well. But yes, try to make diagrams with color. I would suggest, if possible, एक क्वेश्चन में एक डायग्राम बना दो कलर वाला. जैसे कि पैथोलॉजी में है, यू कैन मेक डायग्राम फ्रॉम वो HNE पेंसिल्स होती हैं, so you take them to exam centers. One one doubt I wish to clear to you guys is that medical science optional में you can use colored pencils to make diagrams, so do carry them. और बिल्कुल ऐसा हो गया एग्जाम में कि टाइम ही नहीं बचा है एंड यू कैन नॉट गो इन टू दिस, जो कि होता है. लाइक आई वुड टेल यू अबाउट दिस लेटर ऑन, बट कभी कभी होता है कि टाइम नहीं बचता है आपके पास. तो इन दैट केस यू कैन यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, और यू कैन यूज कलर्ड पेन एज वेल, क्योंकि पेंसिल है ना, थोड़ा चेंज वेंज करने में आपको टाइम लगेगा. यू बाय अ कलर्ड पेन दैट विल ऑल्सो वर्क. वो मल्टी कलर्ड पेन आता है, तो उस पर क्लिक करो तो ग्रीन कलर आ जाएगा, तो यू नो अबाउट इट. सो दिस वॉज अबाउट पेपर वन. सो पेपर वन शुड बी completed in 3.5 months. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यू विल टेक अ टेस्ट सीरीज, बिकॉज आई ऑल्सो टुक इट, एवरीबडी टेक्स इट. सो आप उससे अपना सिंक कर लो शेड्यूल. थोड़ा ऊपर नीचे एक दो दिन डेट हो सकती है, हाँ, ऊपर नीचे आपका डेट हो सकती है, बट दैट still you will be able to complete it on schedule time. Don't worry about it. And yes, do practice a lot. प्रैक्टिस करो राइटिंग करना पेपर वन के, और डायग्राम्स स्पेसिफिकली एम्ब्रियोलॉजी में भी डायग्राम्स है. आप उतना लिख नहीं पाओगे, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, स्पेस भी आपको ज्यादा भरना पड़ेगा. इंस्टेड कि आप थोड़ा सा लिख के उसमें डायग्राम बना दो, तो वो पूरा काम कर जाएगी वो चीज. ठीक है. सो दैट इज अबाउट पेपर वन. पेपर टू के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली पेपर टू में आपका एक सब्जेक्ट है पीएसएम, विच इज फ्रॉम थर्ड ईयर. व्हाट आई विश टू टेल यू इज कि ऑफ्था एंड ईएनटी आर नॉट देयर इन द एग्जाम, सो नो नीड टू रीड अबाउट इट. ऑफ्था ईएनटी का क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा है. आई हैव कंप्लीटेड 10-15 years, तो पिछले 15 साल से ऑफ्था ईएनटी का तो क्वेश्चन नहीं आया है. बहुत रेयर है, शायद एक बार उन्होंने पूछा है कि ओटाइटिस मीडिया के बारे में. अदर देन दैट इज टैकल, कर लोगे टैकल उसको. तो पेपर नंबर टू हैज योर पीएसएम. Secondly, it has your final year subject, which are medicine, medicine, surgery, obs gynae, and medicine, surgery, obs gynae. Then there is short subjects like dermatology. Then there is psychiatry. In surgery, yes, a bit part of anesthesia and the critical care also comes. So these are your final year subject. Basically, the obstetrics and gynecology, your surgery, your medicine, your psychiatry, your derma, and your anesthesia, critical care and trauma care. ये सब सारे सब्जेक्ट हैं. मेडिसिन के लिए आई मेड नोट्स फ्रॉम हैरिसन. I made notes
स्पेसिफिक जो सिलेबस के टॉपिक दिए हैं उसके नोट्स। सर्जरी में यू कैन गो फॉर बेलीज। बेलीज अ बिट टफ, आई वुड से मणिपाल आप उठा सकते हो, मणिपाल इज गुड। एंड देन कम्स योर ऑप्स गाइनी। ऑप्स गाइनी तो इट्स लाइक दत्ता एंड शॉ आर द बेस्ट। दत्ता एंड शॉ आर द बेस्ट फॉर ऑप्स गाइनी, you won't require anything else. And for derma and your psychiatry, derma and psychiatry, you can pick up any psychiatry ka to ek, there is Oxford Manual of Psychiatry. It is very good, and now though there is updated version of it, you can refer to it. And for derma, you can take up any book from any Indian author. It will work very fine. Yes, एक चीज मैं इसमें मेंशन करूंगा कि फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स इंस्टेंट, अगर आपको ये चीज ज्यादा लग रही है कि हैरिसन और ये बेली वेली में जाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर प्रेपरेटर नोट्स और यू कैन गो फॉर डैम्स नोट्स। उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है, दे हैव गिवन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट यस आप उनसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। लाइक फॉर ऑब्स एंड गाइनी, दीप्ति मैम्स नोट्स पर देयर फ्रॉम डैम्स, सो यू कैन रेफर टू देम। उसमें काफी नई नई टाइप ऑफ सर्जरीज और नई नई टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो भी आ रही हैं, जैसे कि यूट्रस लिंक कौन सा नया चल रहा है, टीवीटी है, ट्रांसवेजाइनल टेप, और ये तो काफी काफी नई नई चीजें उसमें ऑलरेडी एडेड हैं। So you can go for the prep ladder notes or DAMS notes to value for the value addition of your basic material. ठीक है, so this is your paper number 2 which should be completed by December. I mean starting from September, after आप पेपर 1 कंप्लीट कर लो तो पेपर 2 पे जा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसी स्ट्रेटजी भी लेते हुए देखा है कि दे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, एक सब्जेक्ट पेपर 1 का एक सब्जेक्ट पेपर 2 का। तो आई ऑल्सो ट्राइड, तो बट इट बिकेम वेरी मेसी, तो मैंने उसको छोड़ दी वो स्ट्रैटेजी। सो आई यूज टू डू पेपर 1 फर्स्ट देन पेपर 2 बाद में, पेपर 2 उसके बाद मैंने पूरा कंप्लीट किया। वन थिंग मेडिकल साइंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि यू विल हैव टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। बहुत जैसे कि देर इज द कोचिंग इंस्टीट्यूट आई वेंट टू इज IS Delhi Institute. There I prepared. They give you material, they give you notes, but yes, you'll have to value add to them. तो आपको कहीं ना कहीं अपने नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, एंड यू शुड मेक योर ओन नोट्स। Like college time mein, I didn't used to make notes. I used to, simply highlight in the book. But this strategy will not work in civil service exam because आपके पास मेंस का जो 3 महीने होते हैं वो इतने कम होते हैं कि you have to prepare for GS as well, you have to prepare for optional as well. मेडिकल साइंस ऑप्शनल थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू दी अदर ऑप्शनल, बट यस अब जो मर्जी ऑप्शनल का बात करो, इट्स ट्रबल फॉर एवरीवन, सो एवरीबडी आपको, people will tell you कि you will have to make notes. Of course you cannot make notes of the 100% of the syllabus, that is not possible. बट यस कि जिन चीजों का आप नहीं बना पा रहे हो, मतलब जो चीजें आपको ऑर्डर में नहीं मिल रही हैं, यू विल हैव टू मेक नोट्स इन देम। ठीक है, सो ट्राई टू मेक नोट्स 60%, 70%, दस 30% यू कैन टेक सम हैंडआउट्स, कोचिंग हैंडआउट्स मिलेगा, या आप ऑनलाइन कहीं से भी इधर उधर से आप लेके जो है अपना काम चला सकते हो। Few mistakes that I would like to tell, do not make in medical science optional is, first is that subjects are very knowledge heavy. तो आप देखोगे कि एक छोटी सी नर्व पे 3 पेजों का कंटेंट है आपके पास, बुक में ग्रेज में 3 पेज लिखे हुए हैं उस स्टैटिक नर्व पे, तो यू विल हैव टू फिल्टर आउट कंटेंट क्योंकि आप वो 3 पेज याद नहीं रख पाओगे, तो यू विल हैव टू फिल्टर आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर देयर। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं वो आपको फिल्टर आउट कर लेनी है, एंड मेक नोट्स ऑफ देम, रिवाइज देम एंड राइट ओनली दैट। स्पेस भी वहाँ लिमिटेड होगा, प्लस यू विल हैव टू मेक डायग्राम, प्लस इतना बड़ा कोर्स है, यू वोंट बी एबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, सो मेक नोट्स फॉर देम। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग once in a week, once you are done with your syllabus. ठीक है, thirdly I would like to say कि make diagrams. ठीक है, then there is certain aspects, like if you are writing anatomy answers then you must write clinical anatomy,
ठीक है, इफ यू आर राइटिंग सर्जरी आंसर्स यू कैन राइट सर्जिकल एनाटमी, जो कि वही फर्स्ट ईयर वाली एनाटमी थोड़ा सा बना दोगे साइड में तो इट विल लुक गुड। तो बेसिक टीनेंट यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मेडिकल साइंस के आपसे वो पूछेंगे कि व्हाट इज दिस। बेसिकली मेडिकल साइंस में टू थ्री टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट एंड व्हाई। तो even if question is why, you must define about the thing। एक अच्छी सी डेफिनेशन देनी है। You have to make a good diagram, you have to write certain points about it, you write some conclusion can be clinical anatomy, surgical anatomy, or its importance or its salience, कि इस नर्व की क्या salience है, इस आर्टरी की क्या salience है, why heart is like that, मतलब हार्ट अटैक के बारे में पूछा है, एमआई के बारे में पूछा है, तो यू कैन राइट अबाउट दैट। सो दिस सिंपल पैटर्न इफ यू विल रिपीट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, you are going to get a decent score which is around 250, and I can assure you of that। अगर आप अच्छे से डेफिनेशन दोगे, कंटेंट रेलिवेंट लिखोगे, प्लस डायग्राम बनाओगे अच्छे से, और एक अच्छा सा छोटा सा कंक्लूजन, वन सिंगल लाइन दे दोगे, तो it will be worth it, and you do not have to do anything new, innovative or something different। यही simple pattern है, every topper does this। When I used to listen to my toppers, they used to do the same thing, I repeated the same thing, and I got very good and decent marks in medical science। Further, one mistake that you cannot do is that you have to stay in touch with the subject, because otherwise you'll be forgetting things। तो दिसंबर तक आप कोर्स लेके जा रहे हो, जनवरी तक लेके जा रहे हो, एंड इवन when after clearing prelims you have to start a bit early from the others। अगर कुछ लोग जैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते रहते हैं 10 दिन 15 दिन, यू डू नॉट हैव दैट लग्जरी। मेडिकल साइंस थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, सो यू विल हैव टू स्टार्ट योर ऑप्शनल अर्ली। सो ऑल इन ऑल आई वुड से फॉर डॉक्टर्स इट इज अ गुड सब्जेक्ट, यू विल बी एबल टू टैकल इट वेरी वेल। कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ओपिनियन बेस्ड आते हैं, यूजली दे आर इन पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में दे लास्ट यू सर्टेन थिंग्स, सोशल चीजें पूछ लेंगे मेडिकल साइंस से एसोसिएट, कि जैसे मिडवाइवरी है या मिडवाइव्स हैं, तो शुड दे बी अलाउड, शुड दे बी गिवन मोर, यू नो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और दिस एंड दैट। तो इसमें आपको जो है अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोज क्वेश्चन डू नॉट राइट इन लेमैन लैंग्वेज जैसे कि आप जीएस में लिखते हो। यू हैव टू राइट फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको क्या लगता है कि आप कैसे करोगे। वैल्यू एडिशन का मेडिकल साइंस में यही है कि इफ इफ यू हैव मेड नोट्स फ्रॉम बेसिक बुक्स, you can add more diagrams to your question and read the question well। Usually क्या होता है मेडिकल साइंस में, you have to read the question and understand the demand of the question। वो पूछ किसी और के बारे में रहा होगा, आप लिख कुछ और रहे होगे। फोरेंसिक में हो जाता है ये कभी कभी, दे आर आस्किंग यू अबाउट गन शॉट वुंड, तो उसमें वो राइफल्ड जीएस में, ठीक है। तो इवन इट हैपेंस एवरीवेयर कि you have to see the question, answer the demand of the question, or according to the demand, if you like, you'll write, then you'll get good marks। Otherwise, आप कुछ भी लिख के आओगे, even though it is relevant, they will not give you good marks। And they are professors of medical science, they have read their subjects। And medical science optional में एक बड़ी problem है कि there is the you know the scope of ambiguity is very less। It is not like GS paper कि कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी भर दोगे। It's not possible to do that। You must know the answer, otherwise तभी आप लिख पाओगे। थोड़ा relevant लिखोगे, वो भी कि कॉलेज की कुछ रोड मेमोरी है उससे, but still it will not be enough, so you'll have to read the topic। Another facet of strategy is कि how to prepare for upcoming paper। अपकमिंग पेपर में यही है कि यू हैव टू डू पास्ट 10 years 15 years क्वेश्चंस। पास्ट 10 years 15 years क्वेश्चन, एक तो जो आपका सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, यू हैव टू मेक नोट्स ऑन दैट।
प्लस आप देखोगे कि व्हेन यू विल सी द पास्ट 15 years पेपर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ सिलेबस से ज्यादा बाहर नहीं पूछा है। बट स्टिल जो जो चीजें बाहर पूछी हैं, आप उसको भी ऐड ऑन कर लो अपने नोट्स में, बिकॉज दे कैन स्टिल आस्क यू अबाउट इट। पेपर 2 में थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे जाता है कोर्स, है ना। दे आस्क यू थिंग्स आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक टॉपिक है मेडिसिन में, तो दे हैव आस्क्ड अबाउट पैराथायरॉयडिज्म एज वेल, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो आप हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ लो, एंड इवन अदर एक दो अगर आप पढ़ पाओ डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद पैराथायरॉयड, सो दैट विल बी वेरी गुड। थोड़ा सा बाहर, यू नो, जस्ट वन टॉपिक अहेड अगर आप होगे तो इट विल बी फाइन, इट विल बी, यू नो, इट विल बी यूजफुल टू यू। जैसे कि ऑडिटरी पाथवेज हैं, सेंसरी पाथवेज है, टेस्ट पाथवे हैं, तो उन्होंने विजुअल पाथवे पूछ लिए। तो ज्यादा दूर नहीं है, आप तो इधर नाक के पास ही है, तो एक बार ऑल्फैक्टरी पाथवे पूछ लिया उन्होंने। तो ऑल्फैक्टरी आप पढ़ रहे थे, उसके अगले पेज पे ही किताब में विजुअल पाथवे भी है। तो अगर आप थोड़ा सा आलस नहीं करोगे, एक बार देख लिया विजुअल पाथवे क्या है, तो यू विल बी एबल टू राइट इट एन एग्जाम। तो ऐसे थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पुट ऑन करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो क्रक्स में यही बता देता हूँ मेडिकल साइंस ऑप्शनल का, you have to make your own notes. Either you can write it by hand or you can make some cutting और photostat करा के उसका folder type बना लो। One, you have to make notes. Second, you have to be a bit updated कि क्या चल रहा है आसपास, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेडिकल साइंस में, जैसे मैंने बताया ओजेम्पिक और नॉल। तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3, यू हैव टू मेक डायग्राम्स एट एनी कॉस्ट। ट्राई टू मेक वन डायग्राम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इफ अ डायग्राम इज नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गया, तो मेडिसिन या सर्जरी हो गया, तो यू कैन मेक, सर्जरी में आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, आप एनाटमी का डायग्राम भी बना सकते हो। इफ दे आस्क यू अबाउट कोलिसिस्टाइटिस, तो यू कैन मेक अ डायग्राम ऑफ गॉल ब्लैडर, और वो कॉमन बाइल डक्ट दिखाती है, तो वैसे ही कैन वर्कआउट। और यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट्स, सो डायग्राम और फ्लो चार्ट्स इन एवरी क्वेश्चन। एंड सो नोट्स, अपडेशन, diagram, diagram and flowcharts, and lastly is revise, revise and revise, revise as much as you can. Okay, so that goes about it. So this is the basic strategy everybody uses in optional. Medical science optional is no different. Yes, it's a bit lengthy, so you have to manage your time according to it. And lastly, I would say कि you adhere to the basic rigorous as well as continuous effort. थोड़ा चीजें याद करने में टाइम लगेगा, but yes, once it will be ingrained in you, it will be very easy. कुछ सब्जेक्ट टफ है, anatomy है थोड़ा more, इट इज अ बिट मोर रोट, तो उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे मेडिसिन वगैरह डर्मा और ये सब एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट ईच एंड एवरी ऑप्शनल, द सेम वे मेडिकल ऑप्शनल कम विद इट्स पर्क्स एंड इट्स चैलेंजेस, सो हाउ डू यू मैनेज दैट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल, इट्स अ स्कोरिंग ऑप्शनल। I think there are in my batch there are good number of doctors. I There is a WhatsApp group of doctors in civil services right now. The number is in double digits, so you know, do not need to worry about that. A good number of doctors are making into civil services, and that too with medical science optional subject. So that's about it. Rest, you can reach out to me regarding medical science optional strategy. I would ask them to, put some of my contact or Insta handle or whatever it is in the description. So for medical science optional, you can reach out to me. Rest, if you have any doubts regarding optional subject, please do tell me. You can connect me with. I'll ask them to put my Instagram. I cannot give my phone number, so you can reach out to me on Instagram. That will be it. सर मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखें यार? मेंटल हेल्थ तो इशू तो रहता ही है, बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आप देखोगे कि आपके दोस्त वोस्त सब मौज मस्ती कर रहे हैं, यू आर लाइक यार बैठ के पढ़ रहे हैं, बट इट्स ऑल वर्थ इट। वंस द रिजल्ट कम, आई टेल यू कि वंस द रिजल्ट कम,
इट विल बी बेटर ऑफ, आई एम टेलिंग यू। जो लोग 5 साल में चीजें कर रहे हैं ना, यू विल बी एबल टू डू इट इन मंथ्स, प्लस यू विल बी सेलेक्टेड, यू विल बी सक्सेसफुल। सो इट डजेंट मैटर। कोई जल्दी फन कर लेता है, कोई लाइफ में थोड़ा लेट फन करता है, तो इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आपका टाइम भी आएगा, यू विल एंजॉय, है ना। सेम ओल्ड थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड, सो जल्दी कर लो, पहले कर लो, डजेंट मैटर। अब समझ रहे हो बात को ना, इट्स नॉट कि कुछ चेंज हो जाएगा, द क्लब्स विल बी द सेम, द प्लेसेस विल बी द सेम, यू कैन विजिट hills or beaches a little later on in life. And मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि do take breaks in between preparation. It is good for your mental health. You study for 6 days in a week, on a 7th day take a break. Some of you might be living in Rajendra Nagar or your hostel and all. अगर आप अपने घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग। तो फिर तो आप दोस्तों दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से मिल सकते हो। सम पीपल दे आइसोलेट देमसेल्फ, डू नॉट डू दैट। टॉक टू वन और टू ऑफ योर डियरेस्ट फ्रेंड्स दैट यू हैव। एंड इफ यू हैव कम टू दिल्ली फ्रॉम सम अदर स्टेट, मैं तो बोलूंगा कि 6 days a week you study and take one day in a week or one evening or an afternoon to explore Delhi. Delhi आए हो तो you enjoy the Mughal architecture or whatever the architecture that is here. कभी सेंट्रल विस्टा घूमा है, नया सेंट्रल विस्टा बना है, पीएम म्यूजियम देखा है, कुछ नॉलेज एडिशन हो जाएगा आपको उससे। सो टेक अ ब्रेक, थोड़ा एक्सप्लोर भी करो, है ना। explore new cuisines and all. So that's how your mental health will be all right. देखो everybody, one thing that you have to keep in your mind that everybody is working hard. Some people might be going to job and this and all. आपको दूर से लग रहा होगा कि भाई उनकी लाइफ तो बहुत सेट है, बट once you talk to them you will realize कि भाई they are also in trouble. उनका भी बॉस उनको डांटता है, या उनको इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। सो नेवर बी दैट नैरो माइंडेड कि किसी का जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, this and all right. So I think that's all regarding the optional strategy. Medical science optional is done from my side. I have given you my book sources. I will give them the book sources as well. They will put it in the description box. And I have told everything, make diagrams, do practice a lot, write tests, you know, and keep yourself updated. You can do value addition from other sources, prep ladder, dams, or whatever you feel. There are other Bardia and all, so you can go for that. So nothing innovative to do, कि कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। गिव इट ऑन अ सेट पैटर्न। द थिंग इज दैट सिलेबस थोड़ा वाइड है, उसको पूरा कवर करके चलना, कुछ छोड़ना मत। कुछ सब्जेक्ट टफ हैं, किसी को बायोकेमिस्ट्री बड़ी टफ लगती है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट। ठीक है। सो कीप योर कोर्स कवरेज एट 100%। एड एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम पास्ट 10 to 15 years पेपर, and practice your answers, get it checked, get it reviewed, and see where you can do better or see where you are making mistakes. So the more you write answers, you will get to know about it, space management, कैसे करना है, कहाँ डायग्राम घुसा सकता हूँ छोटा सा, कहाँ बड़ा ये वो. So that's how you will go about it. So I think I'll keep it short, 43 minutes. That's how the strategy goes. Yes, rest you can reach out to me anytime. For medical science optional, yes, you can reach out to me. So I'm ending the session. It's already around 10. So I wish you all good luck, good night. My best wishes are with all the aspirants. May you achieve whatever you wish to achieve, and make your parents, your families, your friends proud. Best strategy for third year student. Best strategy for third year student, I would say कि by the time देखो थर्ड ईयर तो you will be studying अभी, तो थर्ड ईयर पढ़ रहे हो, फोर्थ ईयर यू आर गोना डू नेक्स्ट ईयर, तो थर्ड ईयर में थोड़ा टाइम भी है, तो यू कैन रिवाइज द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट, एनाटमी और ये, साथ साथ यू कंप्लीट योर जीएस स्टैटिक। क्योंकि डोंट गो फॉर करंट अफेयर्स अभी, बट स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ सकते हो, जीएस 1 का, सोसाइटी एंड ये सब, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, एथिक्स पढ़ सकते हो आप, जो थोड़े इकोनॉमिक्स के बेसिक आप पढ़ सकते हो। बिकॉज एज अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट अगर आप सही में हो तो, इफ यू आर अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट, तो आपको एग्जाम तो इंटर्नशिप के बाद ही, तो दैट विल टेक अराउंड हाउ मच, 2.5 years.
So don't focus much on the current affairs. You focus on static part and your optional part. Okay? So that's about it. I wish you again all the best. Keep preparing, keep striving hard, take little breaks, enjoy your life, and wish you all the best for the future and upcoming attempts. Thank you.